And the other is the flat rate of taxation. I think, I don't know whether you are suggesting flat rate for both the direct rates and indirect rates. One of the, if we go to the direct rates, I can tell you, there is incomes, unfortunately, people are unable to pay tax on real income. If I can share with you sometime, if you are really interested, I will show you the figure. The individual, the association of persons, and even companies. I mean, not the listed company, where the internal control is very strict, which are listed on the stock. You cannot imagine the incomes there. The income is less than the salaried individual portion, the total income. The total gross income is more than the individual, association of person, and the private account. The salaried individual income is more. It is not the contribution on the direct side, is from the withholding tax. If we look at this, so this is a very difficult thing. We have studied in PR. There is a very important economist and also expert in tax. Therefore, curve is also very important. He's still alive. And he has put forward this proposal, this suggestion, and worldwide it is discussed that on the direct side there should be a flat rate for the individual, maybe minimum, maximum 10%, and for association person similarly, and for the corporate should be 20%. But we studied some, I think 153 years of companies. Majority of the world country, majority of the world has to aggressive taxation. And on the indirect side, it is a flat rate but very high. It's yes, Asian average is much low. We are having somewhere 12.5% around this. But in the rest of the world, it's very high, and 100, I think, the rate 135. The average, including Asia and South Asia, every country, the average is around about 16 and 16.5%. But here in our country, the problem is not this rate. We can bring the rate down, but there are multiple rates. Multiple rates, not talking of the essential items. That these are zero rating, exempt, but there are minimum, you can just look at the zero rating of the 5 sector, textile sector. And then we are starting from zero rating to 16, multiple rates. And that reduces the overall quantum of the bill which is being collected. On the one hand, it's very high, 17%. Last year, there was got a proposal that the rate should be, the standard rate should be decreased to 15%. And there was a proposal also that it should be from 17 to 16%. But then when we calculated the rate of last week was somewhere 72.8 billion. Exactly 72.8 billion, which was to be reduced by 1%. Because we are getting somewhere 13.5 billion. So it was not about 72 point something like that. So the government was not looking for that. Although the proposal was there, maybe they wanted to reduce it to 15%, but they would have gone up to 140, more than 145 billion over our past. So the government finally did it. So we are cut off this nightmare. It's really difficult to come out of it. So coming to this combination, I think very important. There is a judgment of the Supreme Court of Pakistan in the Kaiser country. So Charter Brothers, maybe, I think it doesn't get allowed. But I think the only requirement, I think, is that once an application has been filed, there is no part of the taxpayer.
So there should be that once an application is been filed, it is not be known by the concerned commissioner. It should be automatically known. It should be visible to the internet. It is not be known to the others. I totally agree with this proposal. And I think this was yes, this trial, yes, question trial is when we have this test, I think we should do away section 80CA or 8CA and 8A and 8B because there is no more required. When we are analyzing this and we are in real time, trial is checking everything and no input is allowed, and there is no question of this 8B also the restriction of input to 90% of input. I think that should be. And the crash rate is required not for the lean months where the strike is on. It has been required for the fund which is under process for the fund to be verified. That has been for the previous month when the strike was not. That I know. The crash is minor. This is for the old month, for the old tax year. Thank you. Any other question? I think we may request other. सर इसमें रिफंड वाला आरसीपीएस का जवाब नहीं दिया। आरसीपीएस का जवाब नहीं दिया सर आपने। आरसीपीएस जो फाइल करना पड़ रहा है स्ट्राइक आने के बाद उसका जवाब नहीं दिया। अभी भी फाइल करना पड़ रहा है। We will check. I don't know for this. If it is filed even now, and strive should reduce those other documentation. We will need to understand that from July onwards, we are not supposed to file RCPS for refund claim. However, this practice is still being followed, and a lot of taxpayers were not aware of this practice. We continue, and उनके वो tax periods for the purpose of RCPS time bar हो गए, उसकी भी continuation का pending है. तो kindly इस issue को जरूर देखा जाए. Thank you. अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। The question is about the loading taxes. You see section 231A and bill 236W. There are a lot of loading taxes where there is no income, like if you are paying mobile phone pay and we are making transaction. क्या ये लोडिंग टैक्स इनकम की बेसिस पे होना चाहिए या उन लोगों के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए जो अपनी इनकम टैक्स इनकम फाइल नहीं कर रहे हैं? आई कैन शेयर दिस एग्जांपल लाइक जो बंदा per month 30,000 to 15,000 less than 30,000 income फाइल कर रहा है, is not a taxpayer. And there are a lot of requirement under section 114 who is forbidden to file an income tax return. And if he is not filed, then again there are certain banking transactions, loading taxes on banking transactions, like other such activities. क्या आप इस किस्म की सजेशन या इस चीज के हक में है कि ये चीज खत्म हो जानी चाहिए, लोडिंग टैक्सेस उस जगह पे नहीं लगने चाहिए जहाँ पे किसी किस्म की इनकम की मूवमेंट नहीं है, जस्ट एक पेमेंट या सम टाइप इस टाइप की एक्टिविटीज है, और उन लोगों के ऊपर ही रहे जो बाकी टैक्स पेयर हैं, ताकि उन लोगों से एक्स्ट्रा रिफंड कलेक्शन खत्म हो जाए जो टैक्स पेयर ही नहीं। और तो लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स जो टैक्स पेयर नहीं होते, अपने रिटर्न फाइल नहीं करते और उनका रिफंड कहीं नहीं होता। थैंक यू। इसको क्वेश्चन के लिए है कि इस पर्सन इज नॉट लाइबल टू बी फाइल्ड। मैं समझ गया हूँ कि ऐसा है जैसे कोई घर में काम करने वाला मुलाजिम है, उसका मोबाइल फोन भी है, अब मोबाइल फोन पे 14% टैक्स कट जाता है, आप में जवाब दो, और वो उसकी इनकम जो है 4 लाख थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं है, वो बिना टैक्स से बने नॉर्मली जाहिर है जो घर में काम करने वाली खातन है या ऐसे लोग हैं। मेरा ख्याल है हमारा अनफेयर टैक्सेशन है, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमें निकलना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कौन इसको चेक करेगा? देखो ना, जो विथहोल्डिंग टैक्स का है वहाँ कौन इसका डेटा देगा? या तो देखो ना, अगर हम एटीएम वालों को सिर्फ करते हैं तो एटीएम में कभी ऐसे लोग आए नहीं हैं। हमारे पास जैसे इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी कुल 84 लाख के करीब रिटर्न आना चाहिए, जैसे इंडिया में आ रहा है। इंडिया में 5% के करीब लोग हैं जो उनकी आबादी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी पिछले साल 2015 में 12,48,000 के रिटर्न आए,
तो हमारे पास तो ये विधोड़ी बाकी हमारे बहुत बड़ी मीटिंग हुई है और ये आपकी बात में, लेकिन टोटल इसी डब्ल्यू वाली बात जो आप कर रहे हैं वो तो टोटली डिफरेंट इशू है। टोटल इसी डब्ल्यू तो हमने लगाया है जहाँ आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें जो डीसी रेट में रजिस्ट्री है और एपीआर का जो टेबल है, दोनों के डिफरेंस की जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसकी 3% है और उसकी सोर्स के बारे में आपसे नहीं दिया। हमसे हमें पार्लियामेंट से आया था, हमारा कोई प्रपोजल नहीं था, ये पार्लियामेंट की तरफ से आया है, पार्लियामेंट ने खुद पास किया है और वहाँ लोग गए थे, स्टेक होल्डर गए थे और उन्होंने ये जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं, आवास वाले हैं, उन्होंने वहां से कराया, पार्लियामेंट ने खुद पास किया, हमसे कोई प्रपोजल नहीं किया। लेकिन ये डिफरेंशियल अमाउंट में वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है आपका एक डीसी रेट में वैल्यू बनती है और एक एपीआर का टेबल, दोनों में काफी फर्क है। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसमें सिर्फ आप 3% देते हैं, तो वो अमाउंट है दोनों का डीसी का हमारे एपीआर की प्रिस्क्राइब्ड टेबल का, वो आपके पास पैसे वाइड हो जाते हैं 3%। तो इसका आप टोटली डिफरेंट बात कर रहे हैं। इस वक्त प्रॉपर्टी जो खरीद रहा है अर्बन सेंटर में, उसकी तो करोड़ों में वैल्यू होगी, वो उसके लिए कहना और दूसरी जगह वैसे भी अगर आप 250 गज से ज्यादा का प्लाट खरीद रहे हैं, आपको कुछ भी जमा करना है। तो ये मतलब आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। चलो गरीब आदमी के लिए वो बात मैं आपके साथ मान रहा हूँ कि उसका है बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर कोई रोजाना के हिसाब से कोई, वो तो 50,000 सफर वाला है, नॉन फाइलर भी 50,000 सफर वाला है, छोटे वाले अमाउंट तो नहीं है। अगर वो रोजाना कोई निकाल रहा है तो महीने का तो उसके अगर 22 दिन भी वर्किंग रहेगा ना तो 11 लाख रुपए बन जाते हैं। तो क्यों रोजाना 50,000 रुपए निकाल रहा है, छोटे अमाउंट में निकाल रहा है, अगले दिन निकाल रहा है, तो इसका मतलब वो गरीब आदमी नहीं हुआ है। तो ये रिजर्वेशन है, इसको देखने की जरूरत है। आपकी बात सही है कि जो हमारा विथहोल्डिंग रिजीम है, दुनिया में इतना ब्रॉडर विथहोल्डिंग किसी मुल्क में नहीं है और गैर मुल्क से माना भी है। जैसे मैंने उसकी बात मिसाल आपको दी थी ना, जो मोबाइल सब्सक्राइबर जो है घर में काम करने वाला वो है, उसको वो दे रहा है। ये बात आपकी अपनी जगह से, इसको देखने की जरूरत है, इसको मैं नहीं करता हूँ। Thank you. And other than that, while you are talking about India, जहाँ पे banking transaction की बात करते हैं, those person who retired person and उनके बच्चे पैसा कमा रहे हैं, they are outside Pakistan. सही है, उनके ऊपर अगर किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी फैमिली के लिए पूरे करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो क्या वो भी कभी टैक्स पे करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे? ये क्वेश्चन आपका एड्रेस हो गया है जी। मेरा नाम My name is Saifuddin Ali. I am member of Tax Bar Association. सर मेरी गुजारिश एक्सपोर्टर्स के सिलसिले में है कि एक्सपोर्टर्स जो है उनकी सेल्स एक्सपोर्ट सारी जीरो रेटेड है। अब उनके सारे इनपुट टैक्स देना होता है, फिर उनके रिफंड्स होते हैं, रिफंड्स फंसे रहते हैं। तो मेरी गुजारिश थी कि सारी चेन को अगर जीरो रेटिंग है, एक दो मतलब पास में अटेम्प्ट किए होंगे और अगर ये जीरो रेटिंग करते तो एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड के इश्यूज सारे, क्योंकि फिर आरपीओज और आरपीओज में भी फिर वक्त लगता है। एक गुजारिश ये होगी एक्सपोर्टर्स के सिलसिले में कि उनका 1% फाइनल टैक्स आ जाता है। अब जब 1% फाइनल टैक्स उनका आ जाता है तो उसे किसी किस्म का भी विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगेन वो रिफंड में फंस जाता है। और खासतौर पे 65B की अगर टैक्स क्रेडिट है तो इसका इवन 1% भी इसके अगेंस्ट भी क्रेडिट मिलेगी। इनफैक्ट उस 1% में से रिफंड क्रिएट होगा अगर उसने मशीनरी में इन्वेस्ट किया है। तो एक्सपोर्टर्स के लिए मेरी गुजारिश थी कि इसको थोड़ा देखें कि सेल्स टैक्स के रिफंड्स और इनकम टैक्स के रिफंड्स जो काफी रहते हैं, इनको अगर इनपुट टैक्स ना हो तो सेल टैक्स के रिफंड्स नहीं होंगे और उनको तमाम किस्म के विथहोल्डिंग टैक्स है, क्योंकि उनका अगर खासतौर पर 100% एक्सपोर्टर्स। सर एक तो ये एक्सपोर्टर्स के सिलसिले में था। ऑडिट के सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि ऑडिट जो है वो इट इज ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स, जो 177 की फ्रेजिंग है। ऑडिट इज नॉट असेसमेंट ऑफ इनकम, इट इज द ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स। तो उसमें उनकी विथहोल्डिंग
उनका मॉनिटरिंग या वो हो जाती है, उनकी दोबारा विदहोल्डिंग मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनका वो इनकम टैक्स अफेयर्स के ऑडिट है, तो उसमें विदहोल्डिंग भी सारी कवर हो जाती है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अगर ऑडिट हो गई तो उनका विदहोल्डिंग नहीं होना चाहिए, विदहोल्डिंग मॉनिटरिंग नहीं होती। सर एक दो चीजें अगर कह रहा था, 122C के आजकल जो रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे हैं तो उनके नोटिस आ रहे हैं। वी हैव 214D जो 90 दिन का वक्त देता है, तो वो लेट दैट 90 days एक्सपायर फर्स्ट एंड देन इन्वोक 122C। ये मेरी गुजारिश है कि क्योंकि वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। 90 दिन का कानून ने इजाजत दी है कि अगर आप इतना % ज्यादा दोगे तो यू विल बी इम्यून फ्रॉम ऑडिट आल्सो, देन व्हाई इन बिटवीन यू इशूइंग 122C नोटिस। Then 18 अगर क्वेश्चंस के आंसर पे ले लेते तो बाद में आपसे पूछना है। बाद में बात करते हैं। एक्सपोर्टर्स की बात आपकी ठीक है। एक्सपोर्टर्स का अगर उनका 1% मिनिमम टैक्स है एक्सपोर्टर्स पे, तो बाकी जो उनकी होल्डिंग होती है हकीकत ये है कि ले जाती है, यानी बिजली के बिल में दिया अगर आता है उसका तो पहले एक मैकेनिज्म था हमारे नाक के अंदर था और हमारे बिहार का सर्कुलर भी है, वो आप देख रहे हैं कि कोई जरा खा ले उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो बाकी इनपुट में जो आपका इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ कि उसकी आपको वो आपको और होना नहीं चाहिए। मेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और मैं देखने की जरूरत है। मेरा कार्य अगर है क्योंकि वो अननेसेसरी आपको रिफंड नहीं करेगा बहुत सारी चीजों में, जो अगर आपका लोकल कोई सेल है, जहाँ लोकल सेल है फिर तो आपको उसकी कंप्शन नहीं होनी चाहिए, लोकल सेल हो जाएगा लोकल तो होगा। लेकिन देखा हमने ये है कि प्योर एक्सपोर्टर बहुत कम होते हैं, ज्यादातर ये होता है कि लोकल भी कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो इसलिए उनको इसका टोटल जीरो रेटिंग इनकम टैक्स से भी उसे देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये देखने की जरूरत है, आपकी बात है जब उसका 1% हो गया तो फिर बाकी रिफंड वापस करना वो भी बड़ा मुश्किल काम है, रिफंड का इशू होना देर लगती है उसको। और उसमें बाकी जो आपका है सेक्टर इसका तो अपने 5 सेक्टर को जो मेजर टेक्सटाइल कारपेट और जो स्पोर्ट्स को इसका इंस्ट्रूमेंट का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का ये तो हमने जीरो रेट कर दिया है। इसके अलावा जो बाकी एक्सपोर्टर है तो नहीं सेक्टर तो नहीं उनको भी रिफंड हो जाता है, ऐसे पहले सिस्टम है इनपुट से अगर उसका वो है तो वो तो जैसे हो जाता है। एक्सपोर्ट में तो कोई एक्सपोर्ट तो वैसे जीरो रेटेड है, लेकिन वो आपका पता नहीं किस किस्म का एक्सपोर्ट है और उसमें क्या मसला है। बाकी जो 5 सेक्टर है उसको तो जीरो रेट किया है, लोकल भी उसको अगर कोई यान बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको जो यान अनसारी यान कह रहा हूँ वो अगर फैब्रिक बना रहा है और यान उसको परचेज कर रहा है तो यान भी कोई टैक्स नहीं है, उसका रिफंड तो नहीं करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मत ये जो 5 सेक्टर जिसको हमने जीरो रेट किया, इनपुट्स को जीरो रेट किया, अभी उनका जो 8 महीने में है उतना ही इसी सेक्टर का कई सालों का रिफंड निकला जो पिछले साल अब जीरो रेट को वापस करना पड़ेगा, इसलिए कि वो तो खत्म नहीं हो रहा है रिफंड उतना निकला और उनके इनपुट भी जीरो रेट है और उनको उन्होंने ये किया था कि जो बेसिक मटेरियल है उसको हम उसके ऊपर जो हमारा टैक्स है वो इनपुट हम नहीं देते हैं, उसको वेव करते हैं। ये पहले तय होता है कि पहला जीरो रेटिंग जो था 2005 में जब उसके जमाने में आया था जुलाई सबसे जमाने वो इस वजह से नाकाम हुआ। तो इस दफा ये तय हुआ कि बेसिक मटेरियल तो ये क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन हमने रिफंड उतना ही निकला है जो पिछले साल और हमारी रिफंड की जो डिक्लाइन है वो 20% है, वो डिक्लाइन होता जा रहा है। इसके बावजूद भी रिबेट पेमेंट सिस्टम दे दिया और ये जीरो रेटिंग से करते हैं। अब देखने की जरूरत है कि इसकी वजह से जो टैक्स में छूट की वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, कोई और वजह Sir, one minute only, sir. Sir, for senior citizens, sir, for senior citizens, पूरी दुनिया में अब 60 जो है लोग उनको डिस्काउंट देते हैं इनकम टैक्स में, यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन that should be considered. ये जो सीनियर सिटीजन बेचारे बड़ी मेहरबानी। Thank you, Father. So, basically, एक तो
लिए सेक्शन 153 में there is a provision for non-resident कि उनको जो है tax deduction for transaction adjustable है और इसकी वजह से वो लोग जो हैं वो टैक्स से रिफंड लेके जा रहे हैं which is not acceptable because पाकिस्तानी टैक्स ऑफिसर्स हैं उनका वो जो है फाइनल टैक्स में है। तो मेरा ये प्रपोजल है कि क्योंकि सीपैक भी आ रहा है इसको अगर देखा जाए और फॉरेनर्स को पाकिस्तानी कहीं जाके काम करते हैं वो कभी रिफंड नहीं लेके आ सकते वहाँ से। तो ये जो फॉरेनर्स हैं उनकी जो डिडक्शन है कि एडजस्टेबल नहीं होनी चाहिए, रेट कोई भी हो फाइनल फाइनल टैक्स में आनी चाहिए। ये अगर मेरा सजेशन है कि इसको अगर हम देख लेंगे इसको किसी तरह इसमें जो हमारे हमारी उनके साथ ट्रीटी है और ट्रीटी में हर ट्रीटी में लिखा होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का नेट इनकम होती है वो टैक्स दुनिया के किसी मुल्क में फाइनल टैक्स रिजीव नहीं, तो हमें भी उनकी ट्रीटी को आना पड़ता है। ये जो उनका जोड़ी हमने किया है उनके यहाँ इतनी जोड़ी नहीं होती, उनके यहाँ जो हमारे टैक्स पेयर काम कर रहे हैं उनको ये सहूलत होती है कि रियल इनकम यानी इनकम और एक्सपेंडिचर के जो नेट है, नेट इनकम या लॉस है वो असेस होती है और वहाँ नाम से डायरेक्ट टैक्स का ये नहीं। तो हमारी किस्मती हमारे मुल्क में ये है कि हमें जो ये आते हैं यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा यानी आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप उनसे ऑडिट करा रहे हैं तो नेट हमें उनमें बाकी आप सही कह रहे हैं ज्यादातर तो पैसा रिफंड करना पड़ता है। जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है उसी किस्म का काम कर रहा है वो 6% या 8% का टैक्स दे रहा है, जब उनकी उसमें से ज्यादा बल्क जो है यानी अगर 8% टैक्स लगाए 7% लगाए तो 5% वापस हो जाता है, 2% से रहते हैं। तो ये नुकसान में है लेकिन वो ट्रीटी को हमें ध्यान रखना है कि होल्डिंग टैक्स भी उन ममालिक में नेशनल के कॉम्पिटिटिव नहीं है जाती मार्केट में ठीक है कोई पॉइंट नोट करना देखना हां। दूसरी चीज ये जो रिफंड की बात हो रही थी तो मेरे ख्याल में तो रिफंड का जो पूरा बन गया है एक इशू बन गया है। अगर कोई हम रिपेड अनाउंस कर दें रिटर्न रिफंड पे कोई रिपेड या क्रेडिट अनाउंस कर दें तो मेरे ख्याल में आपका बैलेंस कम होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। अगर वरना तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज के इनिशियल नंबर्स हैं वो इतना खतरनाक है कि अभी नजर नहीं आ रहा है कि कभी में कोई रिफंड होगा, लेकिन कोई रिबेट या कोई क्रेडिट अनाउंस किया जाए तो कुछ कम होना शुरू होगा, टैक्स पे कोई इंसेंटिव लगेगा कि मुझे कुछ मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में वो एक तरह से रिलेशनशिप में एक वृद्धि आएगी। तीसरी तरह में जैसे कि बहबूद में जो लिमिट है ना उसको बढ़ाया जाए कि 2 या 3 हज़ार रुपए के लिए लोगों को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो वो सीनियर सिटीजन जो ना बहुत तकलीफ होती है वो आप ये नहीं लिमिट फाइल में चालू करते हैं जहाँ तक रिजनेबल आदमी को जरूरत होती है, उसके बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसी की बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इनकम डिपार्टमेंट में आते हैं सीपीआर जनरेट करवाना है उनको रिटर्न फाइल करवाना है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा हैसल है। उसको अगर देख लिया जाए तो दुनिया में हमारी अप्लाई बहुत बेहतर है। ये इब्राहिम मुराद साहब बैठे हैं माशाल्लाह 85 साल के नौजवान, तो वो अब ये कोई ऐसी बात नहीं है मतलब आप किसके लिए ये काम कर रहे हैं। 65 में तो लोग नौजवान हमारे अफसरान रिटायर्ड अभी यहाँ आएंगे तो मेरे के 60 का भी नहीं 45 में इसको एज वाली बात होगा। वैसे सिटीजन जो है सीनियर सिटीजन को हम सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए, लेकिन इसको हमें देखना पड़ेगा कि किस एज के बाद उनको गुजारा देने की जरूरत नहीं या उनको हम ये इख्तियार देते हैं जो आपने किसी एजेंट को मुकर्रर करें कानून में हमने और वो उनके लिए गुजारा जमा करें, उनकी जो भी इनकम है उसके लिए वो महकमा में जमा करें, किसी वकील को करें, किसी और एजेंट को करें और वही उनके दस्तखत भी करें। और अगर आना भी पड़ेगा वैसे तो आने की जरूरत नहीं है, सब चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ रही है तो वो किसी और एजेंट को मुकर्रर करें, एक एज लिमिट अगर हम रख लें आपको नजर में डाल दें तो हम ये कर सकते हैं जिंदगी बिल्कुल हम कंसीडर कर सकते हैं। आपके ऑफिसर की वजह से हमारे 45 साल वाला पैसा ट्रांसफर कर रहा है कंसल्टेंट। सर इजाजत हो तो एक छोटा सा मैं भी sir, taking benefit of this opportunity in your presence,
एक चीज हम आपको फॉर्मली भी भेजेंगे सीपेक के एग्रीमेंट के साथ जिसका गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है. It's been researched within 5 years Pakistan would need 80,000 qualified accountants. Right now we only have 16,000 cumulative सारी bodies के मिला के. Perhaps it's the right time that we can share with you all the requisites and you can consider, you may kindly consider recognizing ACCA qualified within FPR's audit purview. अभी एग्रीमेंट ICA में भी और दूसरी बॉडीज को रिकॉग्नाइज किया गया है और जाहिर है कि ये एक लकूना सिस्टम में रहते हैं. तो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी आ रही है कि हम सारे मिलकर भी उसको कलेक्टिवली नहीं कर पाएंगे. इसके हवाले से हम आपको डिटेल एक प्रपोजल दे सकते हैं. आप और हमारे टैक्स बार हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और इसको डिस्कस करने तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आई के आप हैं तो एक प्रपोजल अगर बनाते हैं हमें तो कोई इतराज नहीं है. आप लोगों की आपस में कोई लड़ाई ना हो, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है. ऐसी चीज है कि दुनिया की किसी और हमें कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं पता है. अगर किसी और मुल्क में निकलाया है तो आप तो तैयार हैं, लेकिन आप तीन जो है टैक्स बार वाले जो रजिस्टर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का तरीका होता है उसमें क्या होता है मेरा ख्याल है कि उसमें तो ACCA रिकॉग्नाइज है टैक्स बार में रिकॉग्नाइज है FPR हाँ ऑडिट की बात है. तो उसमें आप करें और हमें प्रपोजल भेजें. बिल्कुल हम तो तैयार हैं. वी आर ओपन टू डिस्कशन. जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे फौरन अनऑन. थैंक यू सर. My name is Abdul Wahab. I'm member of ACC and KPA. सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं सेल्स टैक्स के हवाले से. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्राइक ये दावे किए गए थे कि सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग बहुत इजी हो जाएगी, लेकिन मैं अभी 2 रिसेंट केसेस ऐसे फेस कर रहा हूँ जो कि पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं. उनमें से एक ये है कि CPR बनाते वक्त मंथ गलत सेलेक्ट हो गया, तो उसको करेक्शन करवाने के लिए इतना लेंथी प्रोसीजर हो गया है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाने के बावजूद वो अभी तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिटर्न भी डिले हो चुका है. उसकी पेनल्टीज मुझे अलग से फेस करनी पड़ेंगी. तो इसको जरा काइंडली काफी कर लीजिए, क्योंकि पहले ये एक फोन कॉल या ईमेल पर सही हो जाया करता था जब मैडम राना ये ई-पोर्टल को रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन अब ये सारे इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं. दूसरा ये है कि रिटर्न फाइलिंग के वक्त एक सिस्टम इशू है. टैक्स पेयर की तरफ से फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स पेयर ने बिल्कुल सही एंट्री की है रिटर्न फाइलिंग के वक्त, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सबमिशन ऑफ रिटर्न जो उसका प्रिंट आउट मेरे पास निकला है उसमें NTN नंबर बिल्कुल नाम बिल्कुल सही है, लेकिन NTN नंबर जो है वो गलत आ रहा है, जिसकी वजह से वो एक्चुअल बायर के पास इनवॉइसेस नहीं आ रहे. तो अब उसको भी मुझे रेक्टिफाई करवाने के लिए पहले पूरी सिंगल पॉइंट ऑडिट करवानी पड़ी. चले वो भी मैंने कर दी, लेकिन अभी फिर भी वो रिटर्न की रिवीजन जो है मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुई. तो इसको दरखास्त है कि कल अगर आप यहाँ कराची में हैं तो 2 बजे सीमा शकील हमारे कॉर्पोरेट रीजन चीफ कमिश्नर है, उनके दफ्तर में 2 बजे आ जाए तो मैं इंशाल्लाह कल ही आपका मसला हल करूँगा. ठीक है, वहीं से तैयार है आपका मसला हल है. So there's a small question, basically related to operational level. We have 105 employees, out of them, these 70s are taxable under salaries. ठीक है सर, तो उसमें से 10 या 12 pieces हैं शेफ्स के, they're working for us. अब सर उनकी सैलरी है, for example, annually it's over 400,000 but not exceeding to 600,000. अब उनके इशू ये होता है कि 70 people अगर उसमें देखा जाए तो 40-45 जो है वो 600 करें because of the law. लेकिन उनकी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करती है, and there is no limitation for the wealth statement. So basically, it's a facility for in a company that we file tax returns for our employees. तो वो data provide जब करते हैं तो पूछते हैं कि what's the wealth do you have? तो ये जवाब देते हैं कि यार
amount of क्या we are chef, we are used. It is necessary for us to file one statement, but then make that document, that I just won't process me further. So this is something that FPRs must look into this. I think it's तो क्या उनकी वेल्थ बन नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ वेल्थ तो होगी ना। अगर वो वैसे तो ये ऐसे हिसाब से था कि हर आदमी ने वेल्थ का किया था, उन्हें 10 लाख का था और हमारी प्रपोजल थी कि इसको 15 लाख करेंगे, लेकिन अब बदकिस्मती से हुआ नहीं, 15 लाख करना था, जिसकी सैलरी भी और 5 साल जिसकी भी 15 लाख सैलरी, जिसकी 15 लाख और उससे ज्यादा है, उसके लिए हमें करना था। ठीक है, हमारे प्रपोजल में था लेकिन वो हुआ नहीं, वरना ये डिफिकल्टी जो है ना हमारे विश्वास की ज्यादा करते हैं, इसलिए वो हाँ। लेकिन अभी देखो ना, अगर लाख की रिक्वायरमेंट तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा। हाँ, आप वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो अगर आपके पास कोई एसेट नहीं है, आपके एम्प्लॉई रिक्वायरमेंट्स के बाद उसके जितनी उसकी सैलरी आती है वो खर्च करता है महीने में, उसके पास कोई चीज नहीं है, आप एक ही वेल्थ स्टेटमेंट कोई बात नहीं, अगर नहीं है वो नहीं है। ठीक है, वो इसके तक के मसाइल का अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ही चला जाए, वो उधर आप आ जाए, आपको कलम आपके पास मसला है, इसको हल करेंगे। छोटी सी गुजारिश है हम सबकी तरफ से, ये जो हम सैलरी एम्प्लॉइज हैं और वो रिटर्न फाइल करते हैं, प्रॉपर सब चीजें होती है, गुज़िश्ता साल के आपसे बात आपने वायदा भी किया था कि अगर रिटर्न फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सेकंड वीक ऑफ जुलाई में इशू होते हैं प्रॉपर तरीके से विद द कंसल्टेशन ऑफ टैक्स बार, जो काफी टैक्स बार हर वक्त तैयार है, आपको टेक्निकली दिशानिर्देश और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं कि प्रॉपर रिटर्न एक बार आ जाए, कि जो रिटर्न आपने इशू कर दिया दैट विल बी फाइन, उससे कलेक्शन होंगे, कुछ भी होगा वो बात करेंगे। इसी के साथ गुजारिश है कि आपने भाई ने कहा कि सैलरी वालों को आपके पास वेजिटेबल फाइल करना है, एक टेक्निकल स्टाफ है जो अब्दुल साहब का मशीन में है, लेकिन वो बहुत हैवी उनका है, तो कुछ वेजिटेबल फाइल करने के लिए पर्टिकुलर सैलरी के लिए एक लिमिट फिक्स कर दे कि अगर मतलब कि उनकी 1 मिलियन से ज्यादा इनकम है तो वो वेजिटेबल फाइल करे, 1 मिलियन से नहीं है तो नहीं करे। नंबर 2, सर फाइलिंग ऑफ रिटर्न में हर वक्त आपके पास भी प्रेशर आता है, डेट बढ़ाओ हर तरह से पूरे पाकिस्तान। सैलरी के लिए आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 अगस्त, जबकि हर साल ये होता है कि रिटर्न में फाइनल सेशन में आता है वो अक्टूबर में आता है। अब ये 31 अगस्त आपने लास्ट डेट रखी है, विदेश वालों के लिए 30 सितंबर है, तो 31 अगस्त को अगर 30 सितंबर करें तो उसका रीजन ये है कि सब आपके बेसिस में सबके लिए फाइल कंपलसरी कर दिया है। अभी जिनकी 30% कंपनियों की 10 लाख 15,000 एम्प्लॉइज हैं, उनका एक एक्सपर्ट का वो फाइल करता है, तो उसमें सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। 31 अगस्त एक तो रिटर्न भी अवेलेबल नहीं होते, फिर उसके बाद डेट फॉरन आ जाती है और उसमें लोग जो है रिलेटेड हो जाते हैं। अगर आप फिक्स कर दें कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये फाइनल रिटर्न है, इसके बाद कोई चीज नहीं आना, वेबसाइट पे आपने डाल दिया, अब ये हर हालत में 31 अगस्त की डेट है, सर उसको 30 सितंबर कर दे तो ये सबके लिए आसानी हो जाएगी। एफपीआर को एक बार आपको डेट एक्सेशन रिक्वेस्ट भी करें, अगर रिटर्न सही शक्ल में जो भी है भाई जो भी आप काम करें वेबसाइट पे आपका अभी चेंज नहीं हमारे पास जो भी कंप्लेंट है 122.5 उसमें 236 तक डायरेक्टर ऑफिसर देखता है और वो विदाउट कंसीडरिंग द वैल्यू स्टेटमेंट, तो whether the tax has been deducted on the property which declared in the value or not, he just assumes the 122.5। तो उस चीज को जरा चेक करना चाहिए, ऑफिसर को पहले देखना चाहिए। सेक्शन इशू करता है 122.5 जो
आपका जो सेक्शन है 236 के जो प्रोफाइल ऑफ द प्रॉपर्टी पर टैक्स डिडक्ट होता है, तो उसको बगैर कंसीडरिंग द वैल्यू स्टेटमेंट वो इनकम कर देते हैं और उसके बाद जो है स्पेसिफिक इफेक्ट एट द प्रोस्पेक्टिव लॉ. तो this deliberate proposal I think it should be considered since departmental and particular injustice होता है, उसके लिए एम्प्लॉइज के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए. आप सही कह रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ से देखें दो चीजें हैं. एक तो ये है कि हमारे नॉन फाइलर हैं जो सिरे से भी फरा नहीं जमा कर रहे, उनका हमने डेटा इकट्ठा किया. 21,000 हमने कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का इकट्ठा किया है जिन्होंने रिटर्न जमा कर दिया नहीं कर रहे हैं, बड़े लोग पोटेंशियल टैक्स पेयर, और 1 लाख के करीब इंडिविजुअल है हमारे पास जो पोटेंशियल टैक्स पेयर है और फाइल है. तो इस वक्त तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि उन लोगों को नोटिस दिया जाए जो नॉन फाइलर है, उनकी प्रेमिसेस पे रेड किया जाए और उनको टैक्स रेट पे लाया जाए, उनको सारे जमा किया जाए. जो प्राइवेट टैक्स देने वाले हैं उनको आर्थिक नोटिस नहीं देते. जो आप जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं कि 125A सिर्फ टैक्स जो डिडक्ट हुआ है उसके ऊपर कर देता है और वो उसके स्टेटमेंट को नहीं देखता है, ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल बात है. तो किसी सूरत में नहीं है. आप हमें बता दें कौन है जो इसके काम कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन देंगे, उसके खिलाफ एक्शन और फौरन एक्शन लेंगे. ये नहीं कि उसका इंतजार हो. ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इस तरह कर रहे हैं ये नहीं होगा. और ये जो इस वक्त स्ट्रेटेजी ये है कि जो नॉन फाइलर हैं, जो पिछवाड़े सिरे से नहीं दे रहे हैं, जिनका पोटेंशियल टैक्स पेयर है, जिनकी एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, उनका रेट होगा, उनको नोटिस भी जाएंगे, उनको टैक्स रेट मिलेगा. लाइक क्या देख रहे हैं मतलब ये टैक्स कमिश्नर जो है वो ये देख रहा है कि जो डिडक्शन क्या इसमें प्लान क्या है उसको आईटीएमएस पे वो कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसको डिफरेंस की इनवॉल्व कम्युनिटी नोटिस निकाल देते हैं. तो सर सो मेनी इंसिडेंट्स होते हैं आपने बुक्स रिलीज से जिसकी वजह से वो हम उसको मेंशन कर पाते हैं. हमारी जो हार्ड प्रोसेस की डिडक्शन होती है प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट व्हाट ही सेज के फिर आप उसको कंपेयर करते हैं वो आप उसको उस एरिया में भी जरा करिए. सही कह रहे हैं. So my name is Vyadalai. Well, the church tradition. So my name is Samir Hamid and I'm an ACC member. I have a very the judge it's about the election हम बात करते हैं बोलते हैं कि बिल्कुल टैक्स सिस्टम हम जो कहते हैं सिंपल कर दें सारी चीजें, लेकिन आम एक इंसान गामा जो बोलते हैं कि टैक्स सिस्टम बेसिकली ये है कि अगर मेरे अंदर ज्यादा कमाने की सलाहियत है तो मुझे जो है वो ज्यादा पैसे देने पड़े, मुझे ज्यादा टैक्स देना. और बेसिकली पाकिस्तान अगर हम देखते हैं इसके एटलीस्ट जो है हमें बेनिफिट्स कम टैक्स पे जो इसके बेनिफिट्स वो बहुत कम है नजर में. तो हाउ कैन वी कन्विंस द टैक्स पेयर्स दिस आउट? I agree with you. There are more taxes and less facilities provided by the government. But you know, if you look at the structure of the state of Pakistan, the state of Pakistan is not in Islamabad. Your constitution, it is Article 7 of the constitution, which says that the state includes federal government, the parliament, which is the National Assembly, the Senate, and the President, the cabinet, Prime Minister and the Minister, and the provincial government, provincial assembly, the local government, and any other authority, any other local authority which can levy cess or tax. So it has a very broad definition. So the facility, why is it so? The facilities that the federal government can provide, the federal government has at the moment, I am telling you, under 7th NFC award and the amendment that has been made by Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan and the war known Khyber Pakhtunkhwa,
Now it's only 40% of the revenue of the taxes. You can tell your taxpayer that only 40% goes in the federation. जिसको हम कहते हैं ना इस्लामाबाद के पास इस्लामाबाद सिर्फ रियासत नहीं है। रियासत में मैंने बताया कि बड़ी डिफिकल्ट है, बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट जो रियासत हमारी इनकम थी लोकल गवर्नमेंट से, वो अब बनी है और अभी भी उसका पावर है। लोकल गवर्नमेंट जो है, ये जो आपके मेयर होते हैं, उनके काउंसिलर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लोकल काउंसिल है, जिला काउंसिल है, ये हुकूमत ये स्टेट की डिवीजन है, रियासत की डिवीजन है और इसके बगैर रियासत इनकम्प्लीट। तो आप जो कह रहे हैं ना कि बेनिफिट नहीं है, टैक्स ज्यादा जमा, तो आप ज्यादा बेनिफिट तो सूबों से मांगेंगे कि ज्यादा तो सूबों को जा 60% जो आप टैक्स जमा कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, उनका अलग टैक्स अलग है। जो सर्विसेज सेक्टर है वो इस वक्त 59.7% है टोटल जीडीपी में। सर्विसेज सेक्टर आपका बढ़ रहा है, हर साल सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट में तो 70 से ऊपर है। जो यूके या यूरोप में आप जाएं तो सर्विसेज सेक्टर की टोटल जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमारे ग्रुप में आप तकरीबन 60% के करीब हो रहा है। उनमें सेल टैक्स जो है वो सबों को है, वो अलग है उनके पास, उनका प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन अलग है, उनका जो ये एक्साइज वगैरह है, जमीनों से एग्रीकल्चर इनकम जीडीपी का 20% है, वो भी सबों के पास है टैक्स। ना उस पे सेल टैक्स है हमारा और ना उस पे इनकम टैक्स। हालांकि सेल टैक्स हम लगा सकते हैं एग्रीकल्चर, लेकिन जो बोर्ड में आता है ना, उस पर हमने कोई सेल टैक्स नहीं लगाया क्योंकि वो एसेंशियल आइटम में आता है। लेकिन प्रोविंसेस इनकम टैक्स वहां से कलेक्ट कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से टोटल चारों सूबों ने पिछले साल जो ट्रेडिंग की रिपोर्ट है, उन्होंने 1.9 बिलियन का इनकम टैक्स कलेक्ट किया, 1.9 बिलियन रुपए, जबकि जीडीपी में ग्रोथ है एग्रीकल्चर का 5,500 अरब का। उसको जरा डिवाइड कर ले तो कोई डिवीजन बनती नहीं है। 1.9 बिलियन का सेल टैक्स लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये बात दूसरी को मैं टोटली एग्री करता हूँ। जब मैं फाइनेंशियल पे इनकम टैक्स में तो कई दफा ये चीफ एग्जीक्यूटिव बैंक और दूसरे के आते थे, वो कहते थे हम टैक्स कैसे देते, हमने गार्ड रखा हुआ अपनी सिक्योरिटी के लिए, गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी दे रही है। एजुकेशन हम प्राइवेट स्कूलों में करा रहे हैं बच्चों का, घर पे भी हमने वो रखा हुआ है, गार्ड रखा हुआ है, बिजली में जनरेटर चला रहे हैं और बाकी की जो मसाइल है, सड़कों की हालत आपके सामने, अभी भी सिक्योरिटी का पता नहीं चलता किसको मोटरसाइकिल गुजरता है जो हमें डर लगता है। तो ये तो आपकी बात सही है, मसाइल हैं, आप कुछ बेहतर है, हालात कराची के भी लाइट आर्ट में बहुत बेहतर हुआ है, गवर्नमेंट ने आपके काम किया है, अब नजर भी आ रहा है कि सड़कों की हालत और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। So very sir, ये last question होगा, we are already running out of time, this is the last question। अच्छा सुदेश ने कि पुराने जो एक्सेसेस हैं उनको आप की देंगे और कुछ खास प्रोटीन भी करेंगे, तो सर जो लोग टैक्स दे रहे हैं पेनल्टीज तो उनके पास बहुत ज्यादा लिखी हुई है। अगर एक 165 का स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तो 10 साल की पेनल्टी है, और अगर वो सर्टिफिकेट उससे ज्यादा रह जाती है किसी वजह से पेनल्टी प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें होती है, 5 साल की पेनल्टी है उसको। तो जो नए एसएससी आते हैं बाद में एमएससी के जरिए, तो वो तो बहुत एक पेनल्टी आते हैं, तो जो पुराने एसएससी उनको प्रोफेस भी करना चाहिए, उनको तो छोड़ो। इसको कम करेंगे तो बात पहले रही है, इसको कम कर रहा है, ये बात फेयर है, 4000 के बजाय 500 वाली Thank you. Only one question. Only one question. Only 20 minutes. Thank you. आप क्वेश्चन कर लीजिएगा और बात में This is an important question for explorer. मैं रेगुलर विजिटर को यहाँ बता देता हूँ कि वाल कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, और रेगुलर विजिटर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ। रेगुलर विजिटर is a PS 21 officer currently holding the position member in the Revenue Operations and Federal Board of Revenue.
Islamabad, and brings with him rich professional experience spanning over 34 years, right from income tax officer, deputy commissioner, district commissioner, departmental representative at the various separate forums, commissioner Inland Revenue Appeals, commissioner Inland Revenue Audit, zonal commissioner, chief commissioner Inland Revenue, और हमारे लिए कराची में ये बिल्कुल जाने पहचाने पुराने आदमी हैं, तो हमारे दरमियान में आज मौजूद हैं, उनसे दावत देते हैं। Mr. Rehan, Asim Rafid Sahab, President, Karachi Tax Bar Association, Khalid Mahmood, Vice President, Iqbal Abadam, General Secretary, Hyder Patel, Speaker, Direct Tax, and Asif Harun, Speaker, Indirect Taxes, and on the ACC side, the speakers are Harun Jan, Mr. Arif Masood Mirza, and Mr. Umar Zahir me. I think it was a wonderful discussion and also wonderful speeches, wonderful discourses, both on the direct side and indirect side, very impressive proposal. As I always say, you are a think tank for the Federal Board of Revenue, or Ministry of Finance, and the federal government at large. And your proposals have always been very important. But unfortunately, last time also, I think we discussed so many proposals, and there we are, and several times. But most of the proposals we couldn't accommodate because of so many constraints. And if we are, the government officials, the bureaucracy is not the policy making body. We are not. We can suggest, propose, but the policies are made in a democratic sector and in any other sector by the politician. Politicians finally decide all the issues. And our proposals may be accepted and may not be accepted. But these proposals, I can tell you today what I have found. These proposals are of vital importance for a variety of reasons. Number one, some of the proposals are important for tax facilitation, for convincing the taxpayer to come to the tax net because you are in a fair net. You will be fairly treated. People are not coming today into the tax net because they are afraid of the unfairness. The unfair treatment, they are not. I agree. This is. And other proposals are relief-oriented. Yes, these are very important. These can generate growth in the country. Taxpayer problems are solved. They can give rise to further growth, and that will in turn pay a dividend to us in the shape of increase in the revenue. And some of the issues that you have highlighted are creating irritants to the taxpayer and unnecessary irritants. And I think coming to the proposals on the direct tax side, as you know, we have only at the moment, if you look at the last election, the direct tax contribution has come down percent back, 1%. It has come down to 38%, the total mix of the revenue collection. Sales tax is 42%, which is indirect tax. Custom duty is 13% now. And
and federal excise duty is roughly 6%. So this total makes the total 100%. So this is the present position, and I can tell you with heavy heart that people in Pakistan, they are not ready to pay tax on the direct tax on their income tax on their individual, association of persons have very little income on the very little declaration of income. Most of them, there are 8 lakh something, 8 lakh 30,000 individual businesses, and I can tell you more than 25% of them are below taxation. And association of persons, some 57,000, and they have also very few thousand. They have also shown very little income, and they have paid very little tax, income tax on their real income. And similarly, in company, if you exclude 472 companies, the rest of the company's contribution is very small in the total 1,213 billion. Direct tax we are collecting. The direct tax more than 70% of the total 1,209 billion that we collected is from hotel tax. And the remaining 30%, if you exclude 472, you will find a very small amount, which has been contributed by the individual and association of persons. So my submission is that you have a great responsibility to educate the chartered accountant and SCAs, because you have to convince the taxpayer. I mean, they are not telling us. I was telling today, and I am on the floor of the whole country since I have taken over as member tax operation, Inland Revenue Operation. I went to LPO Islamabad, RTO Islamabad, Delhi, Lahore, and now in Karachi. Since one morning, I am discussing with my officer. Unfortunately, we introduced reform in Pakistan, but not with full support of IT and information processing, like it is in the rest of the world. In the world, on the direct tax side, the latest research in the industrialized world shows that 93% of tax evasion has been controlled on. 73%. And 93%, because of the support of the taxman knows more than the taxpayer who is coming to him. More about the taxpayer who is coming to him for audit. So you can just imagine that if the taxman has more knowledge of the economic activities of the person, how can he deny to the government the genuine and the genuine amount of tax? He cannot. So I sensitize my officer to try to know more. We can get information from Nadra. Nadra has provided us a lot of information, and Nadra, because every person who is opening an account with any bank, he has to get biometric verification from us. That is needed by the State Bank of Pakistan. So if an officer give a CNIC number on the bank accounts, not the bank account number, but the branches of the bank's company, I told them to write to Nadra, the individual which are with you in audit, or even the directors of the company, where the company is under the get the information. Because the company, a textile mill, today
install, after 2 years, the owner installs another textile mill. But the textile mill is in the last. How can he manage that? The simple answer is that he is not showing us the real income. And similarly, a sugar mill owner, today, he is installing a sugar mill, and he is also not showing to you. And you are also not bothering about it. He is also not showing you the actual amount of income that is generated. And that experience shows that what is he doing? He is doing that for instance, he is saying that he has paid in a month 10 crores of rupees as wages and salary. If you look into the wages and salary, 7 crores will be actual, and the 3 crores are paid to he has got a CNIC, he has got also the company register, but they are not existing. What does he do? The experience shows that there's 3 crores. He is depositing into the account with confidence. Men are confident. Men are his confidence must be implied. And then at the end of the day, it is distributed among the shareholder or director in the order of their proportion in the company. And then within 2 years, that 3 crores means 36 crores in a year. And that amount is again invested in another sugar mill of textile within 3 to 4 years. And here classes are shown to the department. So this is the position, and this position is shown to you also. And unfortunately, you are also not bothering. You are not going to the real affairs of your taxpayer, whether he is coming to you with the correct position or not. So this is the position that I am telling you on actual basis in Pakistan. The men, the textile mill owner, the sugar mill, all the private limited, wherein these public limited companies, I am telling you 472 only, and few directors and individuals, there are hardly any company which is showing income to us. And exact income are near only 20% of the exact. So this is now coming to the broadening of taxpayers. Yes, I think it's very, very important from us, from our point of view. And we have a very limited number, like I told you. 48,000, and if you go similar circumstances like India has 5% of their population. But 12 lakh is 7% or 8% of our 0.8%, I'm sorry, of our 200 million, if you take the population 200 million. And in India is 50 billion. So that is the area where we have to do a lot. But then again, if you look at the regime, at your regime, the individuals, they are paying a lot of taxes. For instance, if a person has a commercial connection in any area in Karachi, he has to pay, number one, income tax. If his bill is less than 30,000, that amount of income tax that he is paying, that is his final tax. Unfortunately, that income tax that he is paying is his final tax. So what does it mean? It means that if he has to pay to me any other income from business, he has to pay on that income other tax or another amount. So this is unfair. Either he has to be under final tax regime, which is not a good system. Anywhere in the world, I've been in any very, very few countries, but very small portion, and they have also copied us. Unfortunately, those countries who have this final tax regime, they have copied Pakistan and introduced this system. No
no clear in the world. This system is existing unfortunately. So here, this is unfair. This is unjust. He has to pay on that commercial connection, electricity bill, along with the bill, he has to pay. If his bill is 20,000, he has to pay 10% is 2,000. His bill is 24,000. But then 24,000 is not allowable, not adjustable to him. If he is to declare his income and file the return, then he has to pay on the income more. Similarly, he has to pay in his electricity bill also sentence. He is not required. One of my friends was saying that in Pakistan the threshold is 5 million for registration. It's not like so. In Pakistan, for the cottage industry, the threshold has been enhanced to 10 million. And for the retailers, they are not required to buy the return. It's not a matter of 5 million. A retailer has to pay sales tax and the sales tax return. And that is all. That is all the value addition, whatever value addition he is making, provided the electricity bill is up 15,000 or more than 15,000. If it is more than 20,000, he has to pay 7.5%. And that tax is all for the value addition. And he is not required to file a separate return. That is the old tax that he has to pay. So, who are responsible for the small base that we have? Who is responsible? We are not requiring him to file a return. The sales tax return, that small person is not required, but this is the value addition he has to pay. And his turnover may be less, my friend was right to say. With his turnover may be even less than 5 million. But he is paying sales tax to us. And he is not required to file a return. And similarly for the big retailers who are more than or salaries 6 lakh or more than 600,000 for the previous 1 year, then he has to file sales tax return and also sales tax return standard rate. 600,000 per month. So per month, per year, 50,000 per month and 600,000. Then he has to pay the return. So this is in a way a hindrance in the filing of the return. So now the broadening of tax base, we have a lot of mechanism. We have a unit in the Federal Board of Revenue. There is a chief of broadening of tax base. And in India, we have a state where the CNICs and where if a person is found a non-filer, the data is collected from the provincial authorities and KDA and LDA and Defense Housing Authority, that is run into that cell, which and that operational data store of the product, and a way is created by that person. And that way, for instance, if he has any property, and that information is stored there, that is there. If he has supplied anything in the last 5 years, that is also there. If he has withdrawn cash from banks, all this data is collected, and that data is, and then notice is issued to that person. So that sort of an arrangement we have. And nothing. We have given, I think somebody talked about the CPIC. We have given exemption to CPIC for 23 years. These 5 big companies which will be working in Bavaria and all these zones. And the zones which will be created are along this road.
they will be given exemption on account of income tax, sales tax, credit excise, custom. But although these exemptions are available, this will be having a negative impact. And the negative impact will be that there will be contribution to the GDP, but then part of the GDP will be exempt from income tax, sales tax, credit excise, custom duty. So our GDP over the next 5-7 years, instead of tax GDP ratio, instead of increasing, it may come down. It may come down because the civic projects, most of them are exempt from taxes. So that is there. But looking at the importance of these projects, the value of the national objective is far higher than the value of the tax exemption. And those important national objectives include, number one, mainstreaming of Balochistan and other areas, and bringing an investment of more than $52 billion. I think we were, over the last 4 to 3 years, the investment was not picking up, the foreign direct investment was not picking up. And also the uplifting of people of Balochistan and other areas, overall economic development and growth in Pakistan. I think every year, once these started, there will be almost 2% growth in the GDP. And by 2025, the papers show that there will be no unemployed growth in Pakistan. So that is, and then this big ocean board, the other, which will have far-reaching implication not only for Pakistan, but I think for the whole region. So that, I think, those national objectives are far superior than the value of the tax exemption that was granted to these projects. So then is, I think, multiplicity of notices. I think, yes, notices are issued, and some of you are saying that I think we have to be very careful in issuing notices. And we have to concentrate more, as I have said in my remarks, that we have to concentrate more on the leading taxpayer, more on the non-filer, potential non-filer, more on the companies who are not filing return, or those who are declaring losses and income which are not commensurate with their actual income. I think we have to concentrate on that. Not on the existing taxpayer, the good taxpayer, and this year the tax audit policy also. We have excluded those whose income was more than what was required. And I think a very good proposal that this, if the supplies are made by a registered person to a registered person, more than 90% of supply, and similarly, if purchases are made, then this 3% should be enhanced to 5%. I think I agree with this proposal. This is good for documentation and registration. And in corporate dividend, last year we will see the result of that, because our dividend collection on dividend has increased by 56%. There is a huge growth in dividend collection, but we will see that how much is coming from there and how much is from other. And then I think the growth in the inter-corporate dividend, which is covered by Section 49B, the 59B, I think that has to be looked into again. The minimum tax on services, I think 8% is very high, in particular for the corporate taxpayer who has proper statement of accounts and books of accounts. I think this has to be reduced, and it should not be minimum tax. It should be they should be there was. I agree with that clause 79. And I also think that before we go to
basis where this refund was issued, and there is proving artists. And I myself went to the mayor and I explained to them. We have written letter to them also that corporate sectors since corporate is giving tax on real income. At that point of time, it was 35%. And this was very minimum tax, I think it was 6%. So we tried to convince them that this is not good. The taxpayers should not be asked. And I agree with you that this rate should come down and there should be normal tax relief for the companies, at least for the companies. And for the individual and associational person, we may continue with that scheme, but the rate is high. 10% for the individual, that rate is high. And undistributed reserve, I think the stock exchange, there was a discussion, and they say 10% tax at the undistributed reserve. But the critics are saying it's not a good proposal. So there is a dichotomy. So we have to conflicting view of this particular proposal. And then I think I will not come to this. There are a lot of proposals, a lot of things. As Varun has also a lot of very good proposals on the indirect tax side, structural reform, single authority for all the taxes we are ready with the provinces. If you can bring them to the table, we are ready. Yes, there should be a single authority. We are also ready to have a one return on principle. Also the whole Chamber of Commerce, I also suggested there should be one return, but that should have separate portion. The provinces and province should have separate. No, in any case, province, the collective province doing all the hard work for them also, for us also, for all the provinces. So it's very easy to do that. So we will try to do that, but provinces will have to collect their own taxes, and we will have. But there should be, there will be one agency. Maybe that will be useful thing. And we have already de-notified. There was somebody who was saying that the federal excise duty, those services which are giving self-tax to the province, we have de-notified. Most of them, all of them, been donated to de-notified. So we have no more federal excise duty of those services. Except in this now market, where we have this ICT. And yes, grade B, I have already said, and grade A, within grade A, I think that I think after this trial, this provision have to be done. There is no need for it. And I also agree in principle, and I have already said this, that this withholding claim on the self-tax trial, this should be done. After this trial, in case of unregistered person and in case of FTN holder. In case of FTN holder, this will continue, but in all other cases, it will be done away. Withholding tax is nowhere in the world. So this is not based on the international perspective. So withholding tax has to be done away with. And I also agree that SRO 425 should also be extended to the banking company doing the Islamic banking, financial institution. So that I agree. Weight, I think somebody was seeing a single stage weight. Third schedule, yes, third schedule items will be there last year. This rated water was included there because rated water in the market it was 40, it is 40 per water, but it was charged
sold it cheap to people. I can't, so therefore we had to change that. So that has to be clean. Again, then I think commercial imports have a lot of problem. At the moment, industrial raw material and this commercial importers who are bringing this industrial, I think that has to be rationalized, and we have to have a rate for the commercial importers who are importing finished product, a higher rate, 26%, and commercial importer importing raw material, the rate should be 4%, and then for industrial industry who are importing raw material products, the rate should be 3% or maybe 2%. But there should be no exemption certificate. But we will have to look into the affairs of these exporters. Again, importers will be a disadvantaged position because if they are using the raw material and they are paying 2%, and there is no exemption certificate, then on export they will pay another 1%. So they will be a disadvantaged position. So we will have to look into them as I think this corporate tax, somebody said it should be reduced to 20%, 25%. I think in principle we agree, but in Turkey, 2015 we went to Turkey and they said that similar situation, like we are today, we are 1% reducing. So Turkey officials told us that when our tax GDP ratio is equal to 20%, we reduce the tax on the corporate income tax to 20%. Initially, they were also very high. But unfortunately, we have only 12.2% taxability ratio. So that is still far away, but we are gradually decreasing it. And by 2018, I think it will come down to 30%. 2017 it will be 17%. And 2017 it will be 31%. And 2018 it will be reduced to 18%. But then we will also look for further reductions. I agree with this combination, as you have said, and so some other proposal was also by Azerbaijan. And also I agree with rectification, appeal provision to be incorporated in the self-tax law. There is no corresponding such provision like we have in income tax. So appeal effect is very difficult to be given. The officers are reluctant under which law they have to do. So this time we have to do this. And income tax adjustment, I think this is important. We have to amend the law. This time it should be, the proposal should come to APR. This is a hardship issue, and this is, I think, also beneficial to APR. So that we should fund, we can adjust the sales tax against income tax and vice versa. The two are very important. I think there are many other proposals also, but I think with the positive time, I don't know. We have more time or sure? We are tired. So I think whether you know or you do not know, I will just mention three verses. One of your colleagues, who unfortunately expired last year, it was a very fine friend of mine, Mudassir Shah. You might not be knowing that he was a poet. He was a poet, and few verses from his very long poem. He says for you, just to give you a little bit boast because everyone must be tired. He says, Negahe Shokne, Negahe, or dedicated to him. He is no more with us, but one of the finest men.
he says, निगाहे शौक ने जिस दिन से उसको देखा है, निगाहे शौक ने जिस दिन से उसको देखा है, भरे चमन में कोई फूल फूल सा न लगे, भरे चमन में कोई फूल फूल सा न लगे, इलाही छीन ले हुस्ने नजर रकीबों से, इलाही छीन ले हुस्ने नजर रकीबों से, मेरे सिवा किसी को भी दिल रुबा न, मेरे सिवा किसी को भी दिल रुबा न। ये कैसा काल है यारो, ये क्या कयामत है, ये कैसा काल है यारो, ये क्या कयामत है, कि अपने घर में कोई शख्स आशना लगे, कि अपने घर में कोई वफा करो न करो ये तुम्हारी मर्जी है, हमें तो तुम्हारी जफा भी कभी जफा न। थैंक यू। Now this is the time for presentation of the mentors. मैं दावत दूंगा हम लोग के साथ में कुछ शेखिए हैं, साथ में forward for presentation of the mentors. Chief mentor goes presenting here. Please, Heather will play in the Mr. Asif, please. I think we'll be just to do as a again. तो मैं ये बोलूँगा कि इसको अचीव करने के लिए असल नीड
Thank you very much. Now,